హాయ్ అండి. నా పేరు శివకుమార్. సో ఈరోజు మనం ఇక్కడ మధుసూదన్ మార్బుల్స్ దగ్గర అయితే ఉన్నాము. సో మధుసూదన్ మార్బుల్స్లో ది బెస్ట్ స్టోన్, ఓకే, ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఎక్కడో దొరకకుండా ఇక్కడే దొరికే ది బెస్ట్ స్టోన్స్ మనం తెలుసుకుందాము. మరిన్ని విషయాలు ఆగిపోయే ముందు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ గారితో మాట్లాడి వాటి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి, వాటి యొక్క విలువ ఏంటి, దాని ప్రైసింగ్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది అనేది మరిన్ని వివరాలు చాలా క్లిష్టంగా అయితే తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. సో హాయ్ సార్. हाय सर। आप बताइए सर, आप ये अपन का मधुसूदन मार्बल्स में दी बेस्ट क्या क्या है और कौन सा स्टोन है, इसका नाम क्या है? एक्चुअली दी बेस्ट बोलना मुश्किल रहेगा क्योंकि हमारे पास मोस्टली स्टोन जो है सब बेस्ट ही है, बट उसमें एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं अपन कि ये एक ऐसा स्टोन है जो वर्ल्ड में एक्सक्लूसिव है, लाइक वर्ल्ड वाइज बेस्ट बोल सकते हैं। एक्चुअली हमारे फील्ड में जो अपन बोलते हैं रोलेक्स, तो हमारे मार्बल फील्ड ग्रेनाइट फील्ड का जो रोलेक्स है, दिस इज अ रोलेक्स। ओके, इसको एमेजोनाइट बोलते हैं, एमेजोनाइट। और इसमें सबसे खास बात इसका ये रहता है, इसका जो टेक्सचर है, जो फीचर है, इट्स लाइक फोशल्स, जो फोशल्स का मूवमेंट रहता है वो रहता है। और ये कैसे है, दिस इज अ रेयर स्टोन, लाइक एवरीवेयर आप ऑलमोस्ट इफ यू आर गोइंग एनीवेयर और ऑलमोस्ट इन 100 शॉप यू विल गेट इन 1 or 2 शॉप ओनली दिस टाइप ऑफ स्टोन। ओके, इतना रेयर पीस बिकॉज द रेयर, बिकॉज ऑफ द कॉस्टली, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इज वेरी हायर। कितना भाई इसका कॉस्ट कैसा? Routine, like it depend on the basic stone, like starting from 10,000 to 25,000 yeah, per square feet. Each per is like you can see, अब जो आपको ये ग्रीन फीचर्स दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द फीचर्स प्राइस चेंज होता है। इफ मोर ऑफ क्रिस्टल व्हाइट आएगा प्राइसिंग डाउन हो जाएगा, इफ मोर ऑफ क्रिस्टल ग्रीन आएगा प्राइस बढ़ जाएगा। और दिस इज द वन ऑफ द स्टोन विच इज लाइक मेजरली यूज फॉर वास्तु कंट्रोल। इफ आपको लग रहा है कि हाँ हमारे घर में कुछ वास्तु का कुछ करेक्टर सही नहीं हुआ या कोई ऐसा नहीं हुआ, तो मोस्टली घर पे लगाने का इसका रीजन रहता है पीसफुल लाइफ, तो उसके लिए ज़्यादा यूज करते हैं। बिकॉज कोई भी मेंबर अगर इतना बड़ा अमाउंट स्पेंड करता है तो उसको उतना रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो वाई दे आर यूजिंग दिस स्टोन, बिकॉज ऑफ द वास्तु। मेजर रोल्स में वास्तु का भी रोल रहता है इस स्टोन कलर में। ये हो गया एक स्टोन, और आपको और बताता हूँ जो थोड़ा स्पेशल है। ये अजूल मेकाबस है, इज ऑल्सो वेरी नाइस स्टोन। और जो स्टोन का जो आप कलर का टेक्सचर देखो, दिस 100% नेचुरल, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल इफेक्ट नहीं है, दिस 100% नेचुरल। और दिस टाइप ऑफ स्टोन लाइक वर्ल्ड वाइड ओनली 1 कलर और 2 कलर इज लाइक, पूरे वर्ल्ड में ऐसे कलर सिर्फ एक ही जगह आ रहे हैं, वो ब्राजील है। तो ये कलर और कहीं पे भी वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है। तो ये अपने आप में प्रीशियस है। और ऐसे स्टोन को अगर अपन घर पे कहीं यूज कर रहे हैं तो दे विल गिव लाइक मोर एक्टिविटी, लाइक आप कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो अपना सबसे स्पेशल हो गया। तो मोस्टली अगर ये कोई स्टोन लेता है तो वही सोच के लेता है कि मेरे घर पे जो लग रहा है वो वेरी स्पेशल स्टोन लग रहा है, और इसका कोई कॉपी नहीं होगा। मोस्टली कॉपी भी होता है तो भी क्या टेक्सचर चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है, कलर बेस यही रहेगा, ठीक रहता है, बट वेरी रेयर, इट्स नॉट ए रेगुलर स्टोन। ओके, सो नॉर्मली आप जो प्रीवियसली बताया था वो स्टोन क्या, वो जैसा नेगेटिविटी पूरा ऑब्जर्व कर लेता, तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस स्टोन? So this is the wave, like we can say that there's a river. So if some stones give it the river finish, जो river finish like आपकी लाइफ में फ्लो रहेगा, you are not going to any certain area, ऐसा नहीं जहाँ आप स्टॉप हो जाओगे। If you are putting this type of waves in movement, क्या होता है, स्टोन भी अपने आप में, जैसे we are wearing the stone, why we are wearing the stone, because पॉजिटिविटी के लिए। तो स्टोन भी अपने आप में पॉजिटिव देता है, बट उसको कहाँ पे कौन सा स्टोन यूज करना है वो अपने को मालूम होना चाहिए। तो दिस इज द वे। अगर ऐसा स्टोन आप वेव टोन कहीं यूज करते हो तो दिस इज लाइक, आपको लगेगा हाँ मुझे काम करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ। ओके, प्राइस कितना है इसका? So 12,500 per square feet. ओके, ठीक है। और व्हाट इज अदर वन? दिस इज एक्चुअली ये सत्वारियो है, सत्वारियो स्टोन। लाइक जब स्टोन का ग्रोथ स्टार्ट हुआ, लाइक स्टोन क्या है सब लोग समझने लगे, और इंडिया में अगर कहीं बाहर से इंपोर्ट होने लगा, तो ये पहला स्टोन है जो इंडिया में इटली से इंपोर्ट हुआ था। इटली, बिकॉज दे आर प्योर इटालियन मार्बल। और ये स्टोन ऐसा है लाइक इसमें देयर इज नो एनी प्राइसिंग क्राइटेरिया। इसमें आप टोटल अप जा सकते हो, लाइक 10,000, 12,000 or 8,000. The lot of the price variation is there. Starting from 1,000 up to you can go anywhere. So or the rarity of stone is not available in market regularly. Again, जिसको चाहिए वही लेगा, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको ही चाहिए, मतलब होना है, because of the cost। और उसका जो टेक्सचर और जो कलर शेड्स है वो अपने आप में एक लाइक दिस अ रॉयल फील। तो जैसे मार्बल, अगर मैं उधर था जो आपको मैंने दिखाया था, वो रोलेक्स में आपको एग्जांपल दिया, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रोलेक्स इन दिस फील्ड। ओके,
सो पहले जो दिखाया था, दिस इज द क्वार्टजाइट, ब्राजीलियन क्वार्टजाइट. ओके This is the marble. मार्बल So the quartzite is the harder surface, more harder surface than other things. ओके This is the marble. इसका hardness कम रहेगा. उसका hardness like this is like after diamond उसका hardness सबसे ज्यादा है. ओके 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 और व्हाट इज अदर वन यू से ये भी न्यू स्टोन है फ्रॉम New stone. नामीबिया. हाँ नामीबिया से आया है. Okay. और दिस इज लाइक मोस्टली क्या किचन प्लेटफॉर्म पे अपन अगर कोई स्टोन यूज करते हैं तो अपन क्या सोचते हैं कुछ गिरेगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा. और कोई भी आपको एडवाइस नहीं करेगा कि मार्बल आप किचन प्लेटफॉर्म पे यूज करो. हाँ ठीक है, कोई भी एडवाइस नहीं करता है, बट मैं एडवाइस करता हूँ ये आप मार्बल किचन प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो. Okay. इसका जो सरफेस है इज वेरी हार्ड ओके और वेरी डेंस. और मोस्टली क्या होता है लाइट कलर को अपन लगाने में घबराते हैं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ इसको आप लगा सकते हो किचन प्लेटफॉर्म पे ओके और यू विल गेट लाइक गुड लाइफ. ओके सो जनरली किचन प्लेटफॉर्म में अपन लगाने से ऑयल ऐसा गिरने से पूरा दिख जाएगा ना. अदर मार्बल कोई भी आप मार्बल मेरे यहाँ से लेंगे मैं एडवाइस नहीं करूंगा. ओके बिकॉज कोई भी अगर सतवारियो है दिस इज सपोज 5,000 रुपीज स्क्वायर फीट. अब 5,000 रुपीज का अपन लेके भी उसको अपन यूज नहीं कर सकते. दिस इज 1,600 रुपीज स्क्वायर फीट, बट दिस यू कैन यूज इन किचन ओके बिकॉज एवरी मार्बल इज नॉट दिस मच ऑफ हार्डर. ये एक्चुअली अपनी डेंसिटी से नॉर्मल डेंसिटी बहुत ज़्यादा हार्ड है. ओके तो ये हार्डनेस के हिसाब से इसको आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हमने इसको टेस्टेड किया है. तो वी ऑल्सो सरप्राइज कि हाँ इसमें एब्जर्वेशन नहीं है. तो इसीलिए वी कैन एडवाइज दिस. ओके नाइस. इसका प्राइस कितना है 1,600 600 Approx. अप्रॉक्सीमेटली 1,000 to 1,500 600. ओके ओके so all these columns are from the Italian marbles right? Yeah. Okay आप ये देखिए दिस इज हाँ. फ्रॉम वियतनाम. Vietnam oh that's so great दिस इज लाइक ये मटेरियल अपना वियतनाम से आता है. वियतनाम मार्बल. okay वियतनाम फेमस है फॉर द वाइट मार्बल. white marble वाइट मार्बल वहाँ पे बहुत सारी वाइट की वेराइटीज है. तो इसमें वन ऑफ द वेराइटी है सरोस्की वाइट. okay सो ये कैसे है अगर आपको प्लेन वाइट में जाना है और प्लेन वाइट ही आपको चाहिए तो लाइक दिस इज द बेस्ट स्टोन व्हाट वी हैव हियर. पूरा प्लेन वाइट रहेगा, डेंस अच्छा है, मूवमेंट अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड. तो अगर वाइट का किसी का भी चॉइस रहता है तो द वियतनाम कंट्री इज द बेस्ट. और वियतनाम से जो मार्बल आता है वो भी बेस्ट है. दिस इज वन ऑफ द so मार्बल which area we can use this for full of flooring. Flooring. For flooring. Completely Yeah, for okay. flooring only. okay so what is the cost of this This is around starting from 500 up to 1,200 1,500 is for the material Requirement. the grains and the thickness. okay Thick is 20 mm, 18 mm, 16 mm. So it depends on the basics. okay so these are the best varieties of Madhusudan marbles or do we have any extra This is like this is the best quality. okay This is a Michelangelo. Michelangelo okay Like this stone is like very precious. This is from Portugal. The country's name is Portugal. Portugal, So we are getting this metal from Portugal. This is the like one of the stone which you can use for flooring or you can do the backlighting also. If you are doing backlighting, the piece is transparent. okay So the multi-purpose you can use this. okay If you are putting in walls or you want to put light behind, so it cross the light. okay So multi-purpose you can use for flooring, you can use for wall cladding with the lighting effect. okay और दिस इज ऑल्सो लाइक व्हाट यू आर सेइंग लाइक मधुसूदन में क्या स्पेशल आपके पास है. तो दिस इज वन ऑफ द स्पेशल आइटम. दिस आइटम वी हैव एट आवर किशनगढ़ यार्ड. Almost I can say almost 1 lakh 2 lakh square feet readily stock we have. readily stock okay Yeah, we have at Kishangarh yard. Because like here we are retailing, there we are doing the wholesaling. okay so ये regular sale होते ज़्यादा ये वाला piece regular. इसका प्राइस कितना बोला This is starting from 800 up to 1800. okay इसका लाइफ कैसा आता है उनको Life is good, but some features, some filling particles. This is the nature of a stone. This will be there. okay So overall it's good. सो जनरली अपन जब मार्बल्स या ग्रेनाइट लेते समय कुछ सीरीज वी विल सी राइट. वो सीरीज में क्या लाइक पहले सीरीज में अगर कुछ ब्रेकेजेस हो रहा लाइक कटिंग करते समय ब्रेकेजेस या डिलीवरी करते समय कुछ ब्रेकेजेस ऐसा कुछ चीज़ होते रहता है तो वो सीरीज के लिए इम्प्रूव होता है कि वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते हैं लगता है राइट. तो व्हाट इज दिस सीरीज या एक्चुअली इसमें कैसे है अगर कोई पीस ब्रेक हुआ और उसको आप वहीं पे भी फीलिंग करके उसको यूज कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको उसको निकाल के रखना रहेगा. सो यू कैन यूज द सेम स्टोन विद द फिक्सिंग विद द एपॉक्सी. ओके तो सेम स्टोन को आप वही कंडीशन पे उसको फील करके आप फीलिंग कर सकते हो. और द फीलिंग पार्ट इज ऑल्सो लाइक द वेरी नाइस वे. आप फीलिंग प्रॉपर कर देंगे दैट्स विल गो गुड टाइम. लाइक आपको लाइफ अच्छा मिल जाएगा उसका. ओके सो और एक क्वेश्चन है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अब फॉर पब्लिक मधुसूदन मार्बल को चूज़ करना है
तो what is the best thing that you will suggest to the public? सर मैं Actually, why they have to choose Madhusudan Marbles? या देखिए ऐसा है कि वी आर नॉट ए सिंगल पर्सन इन मार्केट, सो आई कांट से दी कहीं मधुसूदन मार्बल बेस्ट है या फिर ये समझ लो मार्बल हमारे पास ही है और मेरे पास बेस्ट मार्बल है. बट आई कैन सजेस्ट यू वन थिंग, what we are giving here to customer, we are trying our best to give the good service, good material. Sometimes like somebody is looking for the like money, like this is like I can say this is a 200 rupees cost, they are searching in 180. So sometimes like might be here and there they can go and purchase somewhere. If they are thinking कि उनको best होना है और अच्छा होना है, तो we like from since 1976 till today we are giving the service to our customer. That's why we are from here to here. Okay. So all these years, so what is the approximate number of customers that you have sell all these marbles? Approximate number of customers. Be frank, like from morning to evening, if nobody is also there, no customer is also there, so we have like our contact, so we have our relation to send the material. Like from morning to evening, averagely we are, suppose we are attending almost 25 to 30 customers. So sometimes some days like we are not attending the 30 customers, the only 5 customers there, but we have a work of 30 customer. Okay. So like sometimes क्या होता है, कस्टमर नहीं भी है तो भी हमारे पास वर्क है, बिकॉज हमने शुरू से जो वर्क चालू किया है, कस्टमर नहीं भी आ रहा है तो फोन पे है, ये भिजवा दीजिए, ये कर दीजिए. सो वी हैव लाइक इनफ, we are getting 30 lorries, we have 35 lorries sale every month. I was asking like all these years, कितना कस्टमर को कितना स्क्वायर फीट भेजा आप? इतने Sir, साल it's से? very इतने साल? difficult because like Approximate number, approximate number. because every month we are getting almost 5 lakh square feet. 5 lakhs. Yeah, every month. Okay. Average. Okay. So like this is a rotation way. So I can say by from since like 20 years we are here. So if you can calculate that thing. Minimum is like 1 and 2 lakhs. We started 2 lakh to till 5 lakhs. We supplied sometimes of 5 lakh 50,000 or sometimes we supplied 2 lakh 50,000. So you can count average 4 lakh 5 lakh square feet per month. ओके. सब ऑडियंस का बारे में जनरली इतना सेल और इतना ट्रस्ट कस्टमर्स पे आप दे रहे ना, वो कैसे पॉसिबल है? कौन सा चीज़ ऐसा पर कस्टमर को दिखा रहे कि वो लोग इतना अट्रैक्ट हो रहा है? बी फ्रैंक दैट कैसा होता है ना, जब कस्टमर आता है तो वी आर नेवर ट्राई टू सेल द मटेरियल, वी ट्राई टू एक्सप्लेन देम लाइक व्हाट दे आर टेकिंग, why they have to take this material. So we are explaining them like this is not good, this good, you can take this, because sometimes like the project person, they are coming from one project, they need specific quality. So what we have to do, we have to show the material and we do the pricing and they will take the material. Or sometime when the house person like who is making his house, then they are coming, so they are asking like what is this, what is this. So we are like we are in front only we are selling like this is not good for you, you can take this. So after sending the material, when they lay down the stone, they are calling us. Be frank, like we are very happy to take material from Madhusudan. Now, like 100%, we are very happy. So we are trying our best to give the good service as well as good material from the start from Madhusudan 1976 to till today. Or like who's the founder of Madhusudan Marble? They are giving one like quote to us. What is that? What is that? This is that never sell the material. Always explain the material. What is the problem? What is the good? What is the bad? Then only they will decide what they want. You don't have to decide कि तेरे को ये बेचना है. But what is the logic behind like that quotation itself? You are saying like never sell. Never sell. What- Never sell since when you have a mind, can- customer आया है. You have in something in mind, customer आया है मुझे ये बेचना है. So this is not right way, because when customer is coming, they have something in mind. Let them explain them. Like ये मेरे पास है, उस वो लेके कुछ और आया है, हम बेचना कुछ और है मेरे को. हाँ. So let them calculate the things. उनको बोलने दो, करने दो, अपना चीज अपन दिखाओ. Then only they know कि नहीं यार मैं गलत सोच रहा था, मुझे तो ये लेना था. So that the कोड के पीछे ये चीज है कि मेरे को बेचना है, बट समझा के बेचना है. नोट डायरेक्टली अब ले जाओ, अच्छा है ले जाओ. इट्स नॉट द राइट वे टू एक्सप्लेन देम. इसमें प्रॉब्लम ये आएगा, आप उस समय ये ध्यान रख लेना, इसको ऐसे फिटिंग करना है, इसमें सीलर लगाना है, इसमें नहीं लगाना है, या इसको उठाते वक्त ध्यान रखना है. तो ये सब चीजें उनको पहले एक्सप्लेन कर देंगे, तो जाने के बाद उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है ना, वो बेचना और समझाने के तरीके में फर्क है. जब बेचोगे तो समझा नहीं पाओगे, और समझाओगे तो बेच भी पाओगे. सही है. तो अब 1970 से ऑलमोस्ट 76 से ये मधुसूदन मार्बल से इम्प्लीमेंट करा. ये एरिया पे दिस एरिया में एस्टैब्लिश किया हुआ है यहाँ पर स्पेशली शमशाबाद में. अप टू 3 ईयर से स्टार्ट हुआ. सो 3 ईयर से पूरा इतना बड़ा है. और पहले कैसा था? From the 1976 this is the Madhusudan Marble.
Oh, from The that, picture. that one. The Okay. picture is there. సో మీరు చూస్తున్నారు కదండి, జనరల్గా 1976 నుంచి ఈ మధుసూదన్ మార్బుల్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ జరిగింది. కానీ ఇక్కడ శంషాబాద్లో ఆల్మోస్ట్ పెట్టి 3 years అవుతుందంట. సో 3 years ఇది ఎలా ఉన్నప్పుడు అక్కడ పోస్టర్లో చూస్తున్నారు మీరు, అలా ఉండేదంట. ఆల్మోస్ట్ 1976లో అలా ఉండేదంట. బట్ ఇక్కడ పెట్టి 3 years అవుతుంది. 3 years మీరు చూడొచ్చు ఎంత పెద్దగా ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారో చూడండి మీరు. ఆల్మోస్ట్ అసలు ప్రతి ఒక్క డిఫరెంట్ వెరైటీస్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ. बताओ भैया इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर करा. I will told you one thing. हाँ. If you want to know about the Madhusudan, आपको ज़्यादा explain करना है तो you can see all the quotes is there. You can see there. Uh-huh. The first ever export of the finest quality marble since 1989. So when we started the export, we are doing export also. Okay, So from okay. 1989 we start the export. ఓకే. So when you are going through like this, you will see all the update కోట్స్ about మధుసూదన్. yeah. ఓకే. సో చూడొచ్చండి, వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అబౌట్ మధుసూదన్ మార్బుల్స్ తెలుసుకోవాలంటే కనుక ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క చోట ఒక కొటేషన్ అయితే ఉన్నది. అంటే వాట్ ఈస్ మధుసూదన్ మార్బుల్స్ అనేది ప్రతి ఒక్క కొటేషన్ చాలా నీట్గా ఆల్మోస్ట్ సరౌండింగ్స్లో ప్రతి ఒక్క దగ్గర ఒక కొటేషన్ ఉంది. అంటే వీళ్ళు స్థాపించినటువంటి ఈ సామ్రాజ్యంలో ఎలా ఎదుర్కొంటూ వచ్చారనేది కొటేషన్ రూపంలో అయితే ఇక్కడ మొత్తం పెట్టడం జరిగిందండి. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ కొటేషన్స్ ఉన్నాయో. అండ్ ఇది వాళ్ళ యూనిక్నెస్ కూడా కనిపిస్తుంది, డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్ కనిపిస్తుంది, డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్ లాగా కూడా కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఆల్సో అండి. సో సార్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ మధుసూదన్ మార్బుల్స్? Achievement, you can see like 1976 where we are, or now is the 2025 where we are. So this is our achievement. You can see the growth of the company, how we are doing. One of the, like when we start the business, a lot of things, like in 1989 we start the exports. Then you can see this quote, the first award winning exporter of Indian marble to China. So we are the first export winning from the government. ఓకే, ఎక్స్పోర్టర్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్, ఇండియన్ గవర్నమెంట్. Indian, we got like achievement from the government related to this. వెన్ ఇట్ హ్యాపెన్, ఆన్ విచ్ ఇయర్? It's almost around 92 or 93 something. 92, 93. Yeah. Nice. Softly we started, like the machinery जो है like slowly change हुआ. From like since 1976 to till today, when we are getting something new machinery or some new technique to process the marble, so we are trying to involve the variety. So like now also we are coming with the new cutting machine which is like thin wire, which is like I can say like if this is, you can see this is a regular cutting. So in one block we are getting suppose 59 slabs. So now we are coming with the thin wire cutting. So thin wire is like we can get 10 slab more. ఓకే. The moment the block is same, but we are getting 10 slab more. So in further we can give this variety to customer in lesser price ఓకే. after some time. Okay. When we process the metal. So everywhere we try to best कि हमको जो नया टेक्निक आया है उसको हम लोग अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करें. ఓకే. So we are always try to do this. So all these years, so what do you say, what is the best advanced features that you have developed all these years? We friends are like we have all good machines like cutting machine. We have best cutting machines in our factory. Then the processor what we are using there, like compound processor or something. So every processor, every processing machine, all the we are getting with the good companies. Like I will show you something here Okay. related to machinery. So we just wanted to understand, like because as per the generations changes and everybody looks for the advantage and new things. Right? So what is the new things that you have implemented and what is the new things if I want to show to the customers? So what do you suggest that? Now you can see like we have lot of variety. We are getting this variety regularly. But we are trying to do something special finish on the surface. So क्या होता है, like today you use this, tomorrow also you are coming the same stone and you are saying yeah this is like old. So what we are doing, like earlier we sell the Traventino with the polish finish. After few time we try to do something else, so we start the leather finish. So you can see this is a polish finish. Okay. After some time we start the leather finish. This is a leather. Okay. So further after leather also we started some dumbbell finish. This is what dumbbell finish. Dumbbell finish. The Okay. stone is same, Okay. but finishing is changed. Okay. Now suppose you used 5 year पहले आपने यूज किया है, अब 5 year बाद फिर आप कुछ नया घर बना रहे हो तो you need something special. Correct. So the same stone with the different finishing. Now you can see the stone, you can say this ये तो different है, ये different है. Okay. So we are trying our best to do some extraordinary work on the stone to explain customer कि हाँ ये हमने कुछ ऐसा किया है. Uh-huh. So you can see like here also we have something. You can see this. This is sword blast. Okay. The finishing name is sword blast. Okay. So
this is finishing we started in Udaipur. Udaipur, okay. So when we started, nobody know about this finishing. Okay. After we started, like I can say within 2 years, like it come in market. So we are always trying what we did earlier. Now the new vendors and new they are doing this finishing now. Okay. So we did almost 2 years, 3 years back only. So you are the creator for this. We can say like for related to CNC designing and all, we are the first who started this type of environment of the stone. Oh, nice. It's what is the cost of this? This is like Indian stone. This is around 150 rupees, 140 rupees. ఓకే సో వీళ్ళు కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ తగ్గట్టు ఎవ్రీ ఇయర్ జనరేషన్ చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ ఎవ్రీ ఇయర్ వీళ్ళు సొంతంగా ఒక కొత్త ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ మెషిన్స్ అయినా కావచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డిజైనర్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క స్టోన్ అంటే మన ఇండియాలో కానీ ఇంటర్నేషనల్లో కానీ దొరికేటువంటి స్టోన్స్లో న్యూ డిజైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళ ఒక టీమ్ వర్క్ చేసుకొని అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుంటూ కస్టమర్స్కి నచ్చే విధంగా అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ అయితే వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో ఆ అప్గ్రేడేషన్ చేయడమే మీరు చూస్తున్న ఇవి డిఫరెంట్ ఒక సేమ్ స్టోన్స్లో ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయో మీరు ఇక్కడే చూసుకోవచ్చు అండి. ప్రతి ఒక్క చోట ఒకటి మీరు చూస్తే ఇది కూడా సేమ్ స్టోనే, అది కూడా సేమ్ స్టోనే, ఇది కూడా సేమ్ స్టోనే, బట్ దానిపైన ఉన్న డిజైన్ మాత్రం వేరైతే కనిపిస్తుంది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అలా వీళ్ళు కస్టమర్స్కి సాటిస్ఫై చేసే విధంగా అయితే వీళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్క్ అయితే చేస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు దీనివల్ల. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ టైం. So one last question for you. So again, आप customers शमशाबाद is far away from the city, right? So city से लोग यहाँ पर आना और satisfaction होना बोलते what is the best thing that you will suggest? I want to change your words. You can't say the Shamshabad is far from city. Why I'm telling you, when somebody is going to build his house, they are searching one stone, one item they are going for somewhere. From Hyderabad to for marble, some person is going to Italy. Italy. Okay. So we can say Italy is the far. Madhusudan is not far. Madhusudan is Shamshabad. Like the four side, you can say like the ORR also a very good connection. So anytime like if you are connecting the ORR, you will get maximum 30 minutes, 45 minutes, or maximum 1 hour. You will reach Madhusudan. So as for me, the Madhusudan is not far from you, or we are like there for you. So never think कि Madhusudan दूर है, Madhusudan पास है. So आप anytime like who want to come, they can take the ORR and they can come, or they can search in Google by the name of Madhusudan Marble, Shamshabad. नहीं मैं इसलिए क्वेश्चन पूछा था कि ऑफ कोर्स यहाँ पर आने के बाद यहाँ से लेके फिर ट्रांसपोर्टेशन उतना दूर लेने का क्यों जनरल कस्टमर सोचते हैं ना, अरे ट्रांसपोर्टेशन में क्यों एक्स्ट्रा लगाना, ऐसा थोड़े लोग सोचते. तो इसी के बारे में आप ऐसा लोगों को कैसा बताते हैं? यहाँ आने के बाद कस्टमर ये बोलना बंद हो जाता है. उसको लगता नहीं है व्हेन कस्टमर इंटर हियर, लाइक जब आता है तो उसकी क्वेश्चनिंग बहुत रहती है. जब अंदर होने के बाद सोचता है कि यार राइट, लाइक वी केम टू राइट प्लेस. सो समटाइम्स अगर आप आओगे नहीं तो आप जानोगे भी नहीं. सही. तो मेरा कहना एक ही है कि लाइक एक बार हम हमारे यहाँ विजिट करेंगे तो यू विल सी ऑल द वेराइटीज, ऑल द वे हाउ वी आर ट्रीटिंग अस लाइक देम. सो आई फील लाइक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी मेरा वीडियो कोई देख रहे हैं या कुछ करे तो उनको रिक्वेस्ट है मेरा, एक बार विजिट करें. विजिट में कुछ जाने वाला है, और विजिट करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा व्हाट वी आर. बिकॉज एनी हाउ लाइक आप एक रेपुटेड चैनल से हैं और आप अपना वर्किंग पे हैं, बट मेरा कंसर्न ये है कि जब वो आए तो आपको भी वही रेटिंग मिले कि नहीं आपने हमको राइट चीज़ दिखाई. सो वी नेवर वांट टू गो बियॉन्ड आवर वर्ड्स. लाइक Got it. So thank you so much for your time, sir, for explaining all these things, and thank you so much once again. I wish you a very good luck. Thank you so much. Yeah. సో అదండి. సో ప్రవీణ్ గారు అయితే చాలా డీటెయిల్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే మీకు అర్థం అవ్వచ్చు కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ అ హై ప్రయారిటీ ఫర్ దెమ్ అండి. సో కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసమే ఇన్ని వెరైటీస్ అయితే మనకు చేయడం జరుగుతుంది. అదే కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని వీళ్ళు ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని అయితే క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఒక్కసారి వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటే, ఒక్కసారి రండి, వచ్చి చూడండి, చూసిన తర్వాత తెలుసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి ఇది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది. సో అంటిల్ సచ్ టైమ్, సో మా ఛానల్ ద్వారా మీకైతే ది బెస్ట్ మార్బల్స్ విత్ ది బెస్ట్ ప్రైస్ విత్ ది బెస్ట్ క్వాలిటీ అయితే మీకు చూపించడం జరిగింది. మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే ప్రతి ఒక్కరు ఒకసారి మా ఛానల్ తరపున కానీ సార్ తరపున కానీ ఒక్కసారి అయితే విజిట్ చేసి ఇవన్నీ చూడండి. అండ్ ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా సరే ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెల్కమ్ టు ఆన్సర్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ శివ సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ గైస్.